Good students. So we are dealing with the fifth paper of communication, and up till now we have seen what is communication, what are the process of communication, what are the dimensions of communication, and in today's video we will be seeing principles of effective communication, and it will also cover 7 C's of effective communication. Now, the first principle is principle of clarity. The communication message should be clear. It should be communicated in simple, easy and commonly understood language. Clarity of thought is the soul of the communication. It is the speaker who makes them meaningful, and it is the receiver who interprets them. So, whatever is conveyed should be conveyed in an unambiguous manner. While communicating, always keep in mind that you should be very clear, and whenever you speak anything, be the person at the receiver end should understand what you want to say. Now, the second one is complete. The message should be complete with respect to thought as well as content. Incomplete messages will create confusion in the mind of the receiver, and he will be forced to seek clarification from the sender. This will lead to showing down of the communication process. So, whenever you are communicating, don't communicate incomplete. You should always be complete, because until and unless your message is not complete, the communication process is it is a failure of communication. So be careful regarding this. Now, the third one is concise. The message should be concise and in concrete form. Ruskin said, say all you have to say in the fewest possible words. It should not contain irrelevant content and words. It should avoid the over elaboration of points. In a nutshell, to retain the attention as well as to save time of the reader, it is essential that the message should be concise. आपके मैसेज जितने छोटे होंगे और क्लियर होंगे उतने ही एक्टिव होंगे. तो जब भी आप कम्युनिकेट करते हैं इन बातों का. नाउ द फोर्थ पॉइंट इज courteous. It means of friendly and helpful behavior towards other. Congenial and high environment is essential to ensure the effectiveness of a communication. Courtesy in the message as well as the manners plays a dominating role in this regard. In order to make communication effective, it is the utmost important that use of only refined language is made. While communicating, it is necessary that we should be considerate, compassionate and friendly. We should avoid becoming sarcastic, impatient and irritated by being aware of ourselves. For courtesy, one should thank generously for any favor and apologize sincerely for any omission. If it is necessary to criticize, we must be tactful in approach so that our communication generates more light than hate. Even if a subordinate is to be reprimanded for his inefficiency or inaction, the superior should do so in an effective manner so that he is successful in enjoying displeasure without hurting the feelings of the subordinate. Very often it has been seen that the use of harsh words and rough tone during the communication becomes the root cause of deteriorations of the relations between the superior and the subordinate. So this is very important that आपका जो मैनर्स होना चाहिए वो पोलाइट होना चाहिए, ताकि किसी को हर्ट ना हो और आप अपनी बात भी कह सकें. Now the fifth point is correct. We should not transmit any message unless we are absolutely convinced of its accuracy and authenticity. The message to communicate it should be spelling, grammar, forms, statistics, information, etc. It's very essential to use correct facts and correct style. Also, the message should be translated, which causes loss of time and money. One said that the information delayed is information denied. Transmission of incorrect information to outsiders may cause actions. If employees forward incorrect information to managers, it may sometimes lead the management to erroneous and disastrous decisions. तो हमेशा ये ध्यान रखें कि आपका जो भी मैसेज हो वो करेक्ट होना चाहिए. जब तक के जैसे आप अगर छोटा सा व्हाट्सएप में भी फॉरवर्ड करते हैं कुछ चीज़ें, तो आप ये ध्यान रखिए कि जब तक आपको उसकी ऑथेंटिसिटी के बारे में पता ना हो, आप कोई भी मैसेज फॉरवर्ड ना करें. Now, the sixth point is consistency.
The communication should be consistent with the plans, policies, programs, and objective of the enterprise. Above all, the communication should be consistent. Inconsistency in communication may reduce the effectiveness of communication, and sometimes it does not remain reliable due to inconsistency. तो ये कंटिन्यूटी जो है, इंकन्सिस्टेंसी जब वो मैसेज कम्युनिकेशन है, एंड टू कीप ऑल दिस पॉइंट्स इन माइंड. नाउ द नेक्स्ट इज candid. The message to be communicated must be candid. This, it must be straightforward and frank. One should not beat about the bush while communicating with to active concealment. आपके मैसेज का हिडन नहीं होने चाहिए. इससे क्या होता है उनके ऊपर गलत प्रभाव पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल, कई बार आप देखते होंगे कि कहीं सेल लगी रहती है, तो आप जाते हैं 50% पेपर में ऐड आता है, और जब आप वहाँ पहुँचते हैं तो आप देखते हैं कोने में 4 ठुक चीज़ें रहती है, उसमें सेल लगी रहती है, बाकी सब फ्रेश रेट में रहते हैं. तो आप अपने आप को क्या महसूस करते हैं? चीटेड. तो इसी तरीके से क्या होता है कि हम कभी भी कंसील नहीं होना चाहिए. हमारा जो मैसेज रहता है वो कैंडिड होना चाहिए, और किसी भी प्रकार का छुपाव नहीं होना चाहिए. इससे क्या है, सामने वाले को बुरा भी लगता है, चीटेड भी महसूस करते हैं, और हमारा खुद का इम्प्रेशन भी खराब होता है. Now, the next point is continuity. This means that communication system in the organization should be kept always alive. In other words, there must be free flow of information across all the levels and the departments of the organization. Various barriers like status barrier, emotional barrier, physical barrier, etc. should not be allowed to obstruct the flow of informations. Any breakdown in the communication system will result in lack of coordination in the working of various parts and levels of organization, resulting in difficulty in achieving organizational goals. देखिए क्या होता है कि अगर कम्युनिकेशन में कहीं कंटिन्यूटी नहीं होती और किसी प्रकार से मैसेज नहीं मिल पाता है, तो उससे बहुत बड़ी हानि हो जाती है. जैसे आपने देखा होगा कि जब कोरोना वायरस हो रहा था, तो आपने एक पिक्चर देखी होगी न्यूज़ में कि बहुत सारे लोग बॉम्बे के स्टेशन में पहुंच गए. उनको पता चला कि ट्रेन जा रही है, तो उससे क्या है, किसी ने उनको रॉन्ग मैसेज दे दिया या इनकम्प्लीट मैसेज दे दिया, या आपस में उनको ये पता था ट्रेन जाने वाली है, लेकिन कब जाने वाली ये नहीं पता था, या कम्युनिकेशन गैप हुआ होगा. तो इस कारण क्या भगदड़ मच गई थी. तो कई बार क्या होता है, बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं और दुर्घटनाएं होती हैं. कई बार कम्युनिकेशन की इनकन्सिस्टेंसी हो जाती है. तो कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन लाइफ, और हमारी पूरे जीवन इसी से जुड़ा रहता है. तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल इन दिस. Now, up till now we have seen along with 7 C's of communication, 8 point also we have seen. Now we can add some principles of timeliness. Timing of communication is of great significance in making it effective. Information must be transmitted to the right person in the right time. It is often said that information delayed is information denied. Unnecessary delays and red tapeism of the communication process should be avoided. Many times the organization lose profitable business opportunities due to delays in the communication. तो communication का हमेशा एक प्रॉपर टाइम होना चाहिए, अदरवाइज क्या है कि बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है. Principle of participation. The principle emphasizes that a communication can be effective only if both the communicator as well as the communicatee actively participate in the process. अगर दोनों पार्टीज आपस में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रही हैं, तो वो फेलियर ऑफ कम्युनिकेशन हो जाएगा. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन. नाउ, प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑपरेशन. In order to make communication effective, it's necessary to have cordial relation based on trust and mutual faith in the organization. सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं है, किसी भी प्रकार का कम्युनिकेशन में ट्रस्ट एंड म्यूचुअल कोऑपरेशन होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज इट बी अ क्लियर. एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज प्रिंसिपल ऑफ फीडबैक. आपने पहले भी पढ़ा है कि जब आप प्रोसेस आप पढ़ रहे थे कि विदाउट फीडबैक कम्युनिकेशन इज इनकम्प्लीट. दिस प्रिंसिपल्स कॉल्स फॉर मेकिंग कम्युनिकेशन अ टू-वे प्रोसेस. मैसेजेस, पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, डायरेक्शंस, ओपिनियंस एक्सेट्रा आर कम्युनिकेटेड डाउनवर्ड्स एंड कंप्लेंट्स, ग्रीवियंसेस, सजेशंस आर कम्युनिकेटेड अपवर्ड्स. तो चाहे आप किसी भी डायमेंशन को अपनाएं, बस ये कम्युनिकेशन में फीडबैक इज़ वेरी एसेंशियल. सो
today we are completing principles of communication, and in my next video we will be dealing all the chains and grapevine and all these things of communication. Thank you.